देवी और सज्जनों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे दूसरे सीरीज ऑफ एपिसोड इन विच वी कवर डेटा, वेयर वी स्टैंड एज फार एज डेटा is concerned. We're a country of 1.3 billion people and we spin out maximum data per second in the entire world. This is a country जहां पे देश की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी आबादी हर सेकेंड ऑनलाइन आ रही है, फिर भी हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन, डेटा कलेक्शन और डेटा मैनेजमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है. And to talk just that, I'm joined by Pavan Duggal. Pavan Duggal Saab is a senior advocate in the Supreme Court of India. He's also a cyber expert. And of course, I'm joined by Sushant, who's also a cyber lawyer and cyber expert. आप दोनों का स्वागत है. Duggal साहब, आप इस प्रोफेशन में कई सालों से हैं and you understand this area. Pegasus एक तरफ रखते हैं, hacks एक तरफ रखते हैं. Where as a country do we stand as far as data is concerned, data protection and data management is concerned? How vulnerable is our entire population? As a country, we stand in a state of wilderness. हम लोग एक ऐसे गुम से जंगल में गुम हो रखे हैं कि हमें ना तो दिशा है, ना हमें मालूम है हम कहाँ खड़े हैं, ना हमें इस बात का आभास है कि हमारे डेटा के साथ किस तरीके से दुरुपयोग होने वाला है, जो आने वाले समय में भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला है. Okay. Actually speaking, India is seeing a very unique kind of a policy vacuum, which it has never seen ever since independence. As of now, when we talk, India does not have any dedicated data protection law. On top of it, India also does not have any law on privacy, despite the Supreme Court declaring that we all have a fundamental right to privacy under Article 21 of the Constitution of India. And finally, we are miles behind other nations, as other nations are galloping ahead and coming up with dedicated laws on cybersecurity, but India has still chosen not to come up with a law on cybersecurity. तो जब इतना विशिष्ट प्रकार का पॉलिसी वैक्यूम भारतवर्ष में है, तो लाजमी सी बात है कि आज इस डेटा इकोनॉमी में, जहां पर तमाम सारे स्टेक होल्डर्स आपके डेटा को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये स्टेटस को कंटिन्यू हो. Because there is absence of law, it allows every kind of data stakeholder to go and access your data and monetize it with impunity. On top of it, हम चाहे इस बात का आभास करें या ना करें, भारत का अधिकांश डेटा भारत के बाहर निकलता जा रहा है. भारत अभी सो रहा है. भारत को अपने डेटा की शक्तिशाली महत्व का अभी आभास नहीं है. And unfortunately, once this data of Indians, which is continuing to flow outside India, continues unabated, the chances are ultimately these are going to have a very, very disastrous impact upon the Indian nation, its sovereignty. तो कहीं ना कहीं हम लोग आवश्यकता है कि अपने जो नींद है उसमें से जगें, झंझोड़ने की आवश्यकता है. We have to come out of our deep slumber and quickly start realizing that much that we talk of India as an IT superpower, we are nowhere. We are miles behind. Our countries are quietly and rapidly moving forward. So we are like the traditional rabbit who has chosen to think that we are ahead of the race and decided to rest, while other turtles are moving much, much further ahead. बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतवर्ष में आज एक पॉलिटिकल विल की कमी है. कहीं ना कहीं क्योंकि कोविड आ गया है, विभिन्न प्रकार की और चुनौतियां सरकार के पास हैं, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्योंकि कारगर सरकार कदम उठा रही है, लेकिन क्योंकि डेटा संबंधी इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया, आगे बहुत सारे खतरे हैं एंड उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा. बहुत सारे खतरे. वे बिहेविंग लाइक दैट रैबिट. सुशांत, टेकिंग फ्रॉम Duggal sir's point of view, we are behaving like a rabbit. Do you think we are deliberately behaving like a rabbit, or do we is the situation like that? I mean, I remember you gave that example of Telangana RTO selling the data to private auditors to the highest bidder. I mean, do you think the government of India and various state governments, of course, it's not a state subject, it's a center subject, we are deliberately postponing privacy laws. We are deliberately postponing data laws in this country just to exploit as much as possible. See, I don't want to talk on the political front, but I just want to tell you that I think maybe deliberate or maybe not deliberate, but I don't think that we are paying enough amount of attention to the legal aspects and the laws which are required. So I think we are not paying enough amount of attention to the cyber law and also implementation, and also coming up with certain kinds of principles which are required at this minute. Because when we see
the history, I think it is very clear that there have been a lot of instances where bills have been prepared but they have not been introduced properly in the parliament. We can look at the medical data protection, which also had a bill. We had the Prepaid Instruments Act bill when demonetization came up. I think all these are just some things which have just been done for an eyewash, but I don't think that we have paid enough attention to get that into reality. Duggal sir, I will take your focus again to the basics. Like our program and our audience is generally young, and most of them do not understand the complexities of the issues we are talking about. So I'll talk you in a very do-to भाषा, एकदम आसान और सरल भाषा में हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. दुग्गल साहब, आप मुझे सबसे आसान भाषा में बताइए, आज अगर मैंने जोमेटो पे कोई ऑर्डर किया और मेरा डेटा लीक हो गया, मैं जोमेटो के ऊपर क्या एक्शन ले सकता हूँ? कोई पॉसिबिलिटी है मेरी एक्शन लेने की? आज के वर्तमान कानून में जो हम कदम उठा सकते हैं वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000. हाँ. पहली चीज, अगर आपका डेटा का अनावश्यक डिस्क्लोजर हुआ है और हैक हुआ है, तो पहली बात तो आप शिकायत करेंगे उनके विरुद्ध पुलिस थाने में, साइबर क्राइम कंप्लेंट बना, क्योंकि आपने अपना डेटा उस सर्विस प्रोवाइडर्स को एक ट्रस्ट में दिया था कि आप उसे सुरक्षित रखेंगे और उसकी साइबर सुरक्षा पर काम करेंगे. एंड इफ दे हैव नॉट बीन वेरी careful in ensuring the cyber security of that data, clearly they have committed various offences under the Information Technology Act 2000 and also under the Indian Penal Code. दूसरी बात, ये ऑफेंसेस जो हैं विभिन्न प्रकार के ऑफेंसेस हैं भारत के आईटी एक्ट में, भारतीय दंड संहिता में, और आप उन्हें इसीलिए क्रिमिनली लायबल बना सकते हैं. दूसरी बात कि ये जो डेटा ब्रीच हुआ है, ये डेटा ब्रीच को रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी मैंडेटरी तरीके से आईटी रूल्स में अब परिभाषित की जा चुकी है. और अगर इस कंपनी ने सरकारी एजेंसी को ये मैंडेटरी तरीके से इसको नहीं रिपोर्ट किया है, तो सही से वो सही अपने आप में जुर्म हो जाता है. तो आप एक सेकंड जो कंप्लेंट है सरकार को कर सकते हैं कि साहब इन्होंने नहीं रिपोर्ट किया, इनके मतलब फौजदारी कार्रवाई की जाए. तीसरी बात कि आप अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन इन सर्विस प्रोवाइडर्स के विरुद्ध मांग सकते हैं. धारा 43A और धारा 43 and 43A. Okay. The scenario is that these are the various grounds on which a person can seek damages by way of compensation. If it is just your normal data, which has got nothing to do with the sensitive personal data, then you can actually seek up to 5 crore rupees per contravention under Section 40. लेकिन अगर आपका ऐसा डेटा है जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, जो आपके बैंकिंग के संदर्भ में है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके हेल्थ डेटा, बायोमेट्रिक डेटा के संदर्भ में है, तो आप अनलिमिटेड डैमेजेस मांग सकते हैं धारा 43A के तहत भारत के आईटी. तो आपके पास अलग अलग विकल्प हैं, और अब तो आईटी रूल्स 2021 आ गए हैं 25 फरवरी से. As a result of these IT rules 2021, these service providers are mandated to implement and maintain reasonable security practices and procedures, और विभिन्न प्रकार की और ड्यू डिलिजेंसेस इनको करने की जरूरत है. अगर ये नहीं करते हैं तो 2 कदम, आप इनकी जो सुरक्षा कवच सेक्शन 17 में मिल चुका है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी से, वो आप नष्ट करा सकते हैं. दूसरी बात, इनको जेल भिजवा सकते हैं. तो आज कानून के अलग अलग प्रकरण है तो सही, लेकिन अधिकांश लोगों को अपनी लीगल रेमेडीज के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं. Sai, I'll pick up from where Duggal Saab left. I mean, we were discussing about this in the conversation which we had before this formal video conversation we are having right now. Can you elaborate the Telangana example which you gave me, Telangana RTO example which you gave me, and can you also mention why implementation of the laws which are being mentioned by Duggal Saab is so difficult in this country? Is it lack of awareness or is it lack of intent? Primarily I think looking at the example of state of Telangana, what they had actually come up is that they had come up with a proposition where the RTA database would be sold for consideration, and depending upon the turnover of the companies, the pricing would be charged. And I think that is something which is not noticed by any of the agencies or by the enforcement agencies. Neither any private complainer has gone ahead and filed a litigation against the state government for the same. But however, I feel that
the lack of intent as also lack of awareness, both would be one of the reasons for the implementation. Because I am surprised as a practicing cyber lawyer, because today, right from the past 2 years, we've been getting a lot of scenarios of GDPR compliances, which means that even a small student startup is aware of GDPR, and they are absolutely having the different kind of an attitude that they don't comply, they'll be fined with huge amount of money. I think that message of deterrence has gone clearly with respect to GDPR. But however, being in the same country, they're not even bothered, and they don't even want to understand the legalities of the present IT law, and they're not even in some kind of understanding that this is required because I'm an Indian entity operating in India and collecting the sensitive and personal data of Indian citizens. Because they have this attitude of let us try to we can manage things because things are not that severe in India, because nobody bothers about data breaches and nobody takes things in a serious manner. Nobody is reporting. Under-reporting is also something that's been one of the main reasons. I think all of these are some things that could be the possible scenarios for the lack of implementation of these rules. We have very good guidelines, but I think implementation of these is something that has to happen in a way where the message of deterrence has to go. So I think only then people will start to think of compliance. Sure. That was touche, Sushant. Now, Duggal साहब, we are living in a country जहाँ पे लोग free coffee के लिए जाके अपने phone numbers दे देते हैं, ठीक है? We are living in a country where we are very open and very casual with our PAN number, Aadhaar number, phone number, email IDs. We go to a shop, we sign in for an app. हम CCD जाते हैं, then we give our phone numbers कि अगले बार 10% discount मिलेगा coffee पे. We have no idea what we are sharing and with whom we are sharing. We go to pubs. The young people, they go to pubs और वहाँ पे कोई एक बाहर गार्ड खड़ा होता है, वो आपका नंबर बड़ी कैजुअली रजिस्टर में लिखता है. इसका कोई प्रावधान नहीं है कि वो आपका डेटा कहीं कुछ बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं. As a country, do you think that we are very vulnerable because of our lack of own awareness of the data? I mean, the majority population in this country does not even know what data, how important data is, or that data is the new oil. कहीं ना कहीं हम लोगों की जो परसेप्शन है वो गड़बड़ा सी गई है, एंड उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस है. हम लोग हिस्टोरिकली एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली सेटअप से निकल के आए, तो माइंडसेट है कि हमारा डेटा हमारा है ही नहीं, हमें सब कुछ साझा करना है. सो वी लैंड अप शेयरिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज वी डोंट रियली perceive data as a valuable commodity, and considering the fact that the data is now the new oil of the data economy, we land up giving all kinds of our data. In fact, I would like to say that currently India is undergoing a huge revolution. I call it the Great Indian Vomiting Revolution. Vomiting Revolution. Vomiting Revolution. आज भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल डेटा की इंटरनेट पर, बिना सोचे समझे कि उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं. एक बार अपने हाथ काट के आपने डेटा के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दिया, कहानी खत्म. उसके बाद डेटा कभी वापस नहीं आने वाला. उसके बाद उस आपके डेटा का दुरुपयोग कहाँ, किस वक्त, कैसे श्रेणी में होने वाला है, आपको इस बात का भी आभास नहीं है. सो पीपल अल्टीमेटली आर जंपिंग ऑन टू द डिजिटल बैंडवैगन, आर टेकिंग द इंटरनेट फॉर ग्रांटेड, but they are quickly realizing that change is the only constant that is going to hit them. So consequently, the kind of people data that's gone up onto the internet during COVID-19, I can easily say people are completely clueless about data and their potential future approaches to data. I've recently written a book called New Cyber World Order Post COVID-19. और उस किताब में मैंने लिखा है कि जब ये हम लोग COVID-19 के करंट और सब्सिक्वेंट वेव ऑफ इन्फेक्शंस के साथ विजय हो जाएंगे, तब हम एक नए इंटरनेट में घुसेंगे, एक नया साइबर युग होगा. There'll be a new cyber world order where states will become very powerful, where cybercrime will be the default normal, and where increasing cyber security breaches will be a daily phenomenon. तो उस न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर में अगर कोई भी चीज हमको बचाएगी तो हमारा डेटा है. तो कहीं ना कहीं हमें आभास खुद होना पड़ेगा कि हमें अपने डेटा को किस तरीके से बचाना है. लोगों को अगर हम डेटा दे रहे हैं और एक कप कॉफी ले रहे हैं, शायद लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है कॉफी, क्योंकि एक बार आपका डेटा चला गया और उसका दुरुपयोग, उसके मोनेटाइजेशन हो गया, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे. और क्योंकि डेटा भारत के बाहर जा चुका है, भारतीय कानून भारत के बाहर है नहीं, invariably you will find that you will not have enough remedies. So the ultimate idea is to just sensitize people that look, you will have to start getting more serious about how you share data,
आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन ओल्ड फिल्म. एक फिल्म थी आनंद. उसमें राजेश खन्ना जॉनी वॉकर को रोड पे पकड़ के कहता है साहब मेरे दोस्त बनिए. वो चीजें फिल्मों में होती हैं. लेकिन आज अगर हम ऑनलाइन देखें तो हर व्यक्ति नए नए फ्रेंड्स को, नए नए फॉलोअर्स के तलाश में, फिराक में अपनी हर वो जानकारियां लोगों को देता रहता है. कहीं ना कहीं हमें अब सीखना पड़ेगा that we only need to share data on a need to share basis, on a need to know basis. क्यों? क्योंकि सारी दुनिया आज हमारी इज्जत इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम इंसान हैं, बट इसलिए कर रही है क्योंकि हम डेटा ऑब्जेक्ट हैं. हम डेटा उत्पन्न कर रहे हैं और हमारी ये जो कंपनीज है यही डेटा को लेकर मोनेटाइजेशन करेंगे और यही डेटा को लेकर हमारी डेटा प्राइवेसी और हमारी जो पर्सनल प्राइवेसी है उसका हनन करेंगे. डुग्गल साहब, आई रिमेंबर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू अ फ्यू डेज अगो कि जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जीडीपीआर की तर्ज पे, जैसे कि यूरोप में है, यूएस में अपने प्राइवेसी लॉज हैं, हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है एक तो बहुत ज्यादा डेलिबरेटली डिलेड हो चुका है पिछले कई सालों में, और उसको इम्प्लीमेंट होने में भी, स्पेसिफिक क्लॉजेस को इम्प्लीमेंट होने में कई साल लगेंगे. एंड you mentioned, I remember very clearly you mentioned that it does not have much teeth and it does not have much provision to sue the government bodies. It is a very good bill maybe for the private sector, but there is no pravadhan of intimidating the government side of it or talking to the government sector on it. Considering these arguments, do you think that we are headed towards more of a snooping economy? Like, if you remember, the reference point will be Cambridge Analytica in the United States in 2016. Do you think we are moving in that direction of a snooping economy? I would tend to agree with that. India is slowly but surely moving in that particular direction, primarily because the adequate checks and balances for preventing snooping are non-existent. Well, the recent Pegasus controversy has shown us that, look, if spyware is going to be used for surveillance purposes, which is clearly illegal in the country, and yet you find journalists and their phones being targeted through forensic analysis, we've been able to find out that they have become victim of the Pegasus software attacks. We have to be quickly aware of the fact that yes, there will now be increasing surveillance, including increasing snooping. Actually, surveillance is a legitimate tool in the hand of any government. But Correct. The ultimate scenario is that it must have appropriate checks and balances so that its potential misuse could be potentially minimized in the coming times. लेकिन जब हम भारत के वर्तमान कानून पर दृष्टि डालते हैं तो हमें लगता है कि भारतीय कानून इस तरह की वर्तमान ग्राउंड रियलिटीज को डील करने के लिए इफेक्टिव नहीं है. हमारा इंटरसेप्शन केवल सेक्शन 69 आईटी एक्ट के तहत है. कुछ चुनिंदा ग्राउंड्स में इंटरसेप्शन हो सकती हैं. These could be in the interest of sovereignty, security, integrity of India, friendly relations with other nations, public order, decency, morality, or to prevent the commission of any cognizable offense. लेकिन ये पैरामीटर्स इतने ज्यादा ब्रॉड हैं कि लगभग स्थिति इसके अंदर आ सकती है. हर आदमी आ सकता है. That's correct. अंकुश लगाने की जरूरत है. और अब जब नया ग्राउंड रियलिटी आ गया है कि स्नूपिंग हो रही है थ्रू स्पाईवेयर, थ्रू साइबर क्राइम्स, तब तो हमें और तैयार होना पड़ेगा कि ये नया ग्राउंड रियलिटी. और मैंने अपनी नई किताब में भी लिखा है, यही कहा है कि साहब अब स्टेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हैं. अगर आप जब से कोविड आया है तब से लेकर आज तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कंट्रीज में कानून बने हैं उन पर दृष्टि डालते हैं तो आप पाते हैं ये सारे कानून लगभग ये स्टेट्स के हाथों को बहुत ज्यादा सशक्त कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं. और ये स्टेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी तो आपकी डिजिटल प्राइवेसी, आपकी जो डिजिटल लिबर्टीज हैं उसके हनन करने में कहीं ना कहीं वो लेजिटिमेट उनका इंटरेस्ट रहेगा. On a scale of 1 to 10, where do you rate the internet privacy in this country? Just answer that question in the numbers. I think on a scale of 1 to 10, I will rate internet privacy at 2. 2. Sai? Yeah, I would also rate it at 2. Sure. Duggal Saab, on the scale of 1 to 10, where do you rate filing of cases? I mean, criminal proceedings initiated against cyberlaw violations in this country and the justice being served on a scale of 1 to 10 on an average? 0.5. 0.5. Sai? Yes, maybe the same thing because today, yesterday I received a call where the cybercrime has taken place in the year 2013, and then now they're trying to proceed further and then want to take things in a 2013. That's 8 years, ladies and gentlemen. So 2 and 0.5. This is the rating which has been given by out of 10 by our cyber experts. So we can understand how urgent is this issue. The data law should have been passed yesterday.
and not today or maybe tomorrow. Thank you, Duggal Saab. Thank you, Sai, for joining us. This is all for this episode. Ladies and gentlemen, we'll see you on the next one. Goodbye.